ऐसे तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good afternoon to all of you folks out there. Welcome to Hold That Thought Season 1, Episode 6. With me, your host and your pakki dost, Sarah Mashhood. Hope you're feeling fantastic and ready to roll with us in today's conversation. We've received quite a few queries about the show as to what the purpose of this is. Well, it's an opportunity for all of you to meet the Torch tribe. Season 1 merely shows what they do because, we talk to the tribe about their personal lives, their thoughts, their hopes, their beliefs. And in Season 2, which is going to happen post-Ramzan, we'll have some more insights into their work, the sessions they do, the topics they cover, also the various methods they apply. So all in all, a win-win for both of us, you and me. So are you guys ready to meet my guest for the day? All right. Today on Hold That Thought, we have with us a real deal, a strategic HR personality, crafting strategies that not only boost productivity, but also redefine it. She's got it all, got her fingers on the pulse of organizational development, change management, pretty much everything HR that is getting the right people, pushing the team to peak performance. And let me tell you, her training sessions, they're not just talks. They are transformative experiences. We present to you Ghazala Rashid. He's here to stay and slay. So kick back, grab your favorite snack, and let's get on with this show. Hello and Assalamu alaikum, Ghazala. How are you today and what's been up? How are you doing? Walaikum salam. Thank you very much. I'm feeling good and thank you so much for making me so special. I'm really honored and I'm feeling like probably I'm some kind of celebrity here. Oh, you actually are. Okay, Thank so you my audience. Has always been a darling. Thank you so much, Rikat. Yeah. Okay, so for the audience, don't forget to share your name, what you do, where you're from, शहर और इदारा बताना मत भूलिएगा. Name तो वैसे ही Facebook के ऊपर आ जाता है. Going back to Ghazala, you're one of the seasoned experts on our panel, bridging gaps with your wisdom. I'm curious what it's like engaging with the younger generation today. And how are you adapting to the technological changes that are taking place in the field, at work and in life? Okay, I'll start with my background. My name is Ghazala Rashid and I hail from Pindi and Islamabad. My whole education was there. I graduated from Government College, the 6th Road for Women, and then I went to the Quaid-e-Azam University. And I always take pride in telling that
Quaid-e-Azam University is still one of the very renowned and best universities, and I'm really honored to be part of there, and I have learned it. I did my MBA from there in the session of 81, 82. Then I came. Then my life totally changed. My father was abroad, so I had to live in the hostel also. That was altogether a different experience. I really liked it. There was great learning. I developed some very special social relations, and the learning opportunities were great because all the time the library and other resources were available to me. And then in 83 I joined PIA. That is how actually I joined as management training officer. PIA, at that time, PIA took 30 to 40 MBAs from all over the Pakistan. It was a part of their succession planning, and we all came, and not like other, when you join an organization and you're the only candidate or two, three people there, two, three colleagues. So you really, feel kindly, it takes a time to settle there or adjust there. But for me, it was a real treat, 40 people getting training together, going for lunch together. And because Karachi was the head office, so we had to come here. Although I belong to Islamabad, but I had to come here and live here. So that was really fun. And honestly, Sarah, that fun continued till the last day, although we had seen bad times in PIA. But my journey in PIA has been excellent. I can't tell you how good organization it is still, and the potential it has to grow, because my employee engagement with PIA is very, very strong, and I'm really proud to be part of it. So Ghazala, how do you deal with the young generation like today, in today's time, because technology भी बहुत ज़्यादा changes आ रही हैं उसके अंदर, और साथ में नौजवान भी different हो गया अब, क्योंकि उनकी भी उसमें भी development बहुत ज़्यादा आ रही है. How do you think are you able to handle the the change that's come in? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत difficult है. I don't even know what language my kids speak now. Actually, my kids are grown up now, so that period is over, which you are referring to. So, Sarah, you are very right. बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि like you said कि changing environment के साथ, if you are not adaptable and we don't try to learn, so that's really difficult. So first of all, we should, especially the professionals, should have this mindset that they are there to learn and they are adaptable to change. That is the real self lesson which you have to give it to yourself if you want to grow as a professional and become a successful leader or a successful person. So when I'll take a minute to give you the brief. When we joined PIA, so we used to they were very limited, although we had the IBM system in PIA in our computer center. But in our offices, we were, only working on SuperCal and Symphony. And then when the things grow with the introduction of new technology, we were given training, extensive training. And PIA is one of the organizations which highly focus on the training. So जब भी कोई नई चीज आती थी, हमें फौरन ही उस पर ट्रेनिंग दी जाती थी. और साथ साथ हमारे जो bosses थे, they were less bosses and more kind of mentors, like fathers to us, and had been telling us the pros and cons, and they really had kept us ready to accept any change. So it was not a difficult journey, but yes, you are right कि वो जब बच्चे हो जाते हैं और like अभी भी if I have to, वहाँ पे I had a fleet of people to work for me, but now in this world मुझे खुद हर काम खुद करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा difficult है. It is difficult to adapt this technology, rather this speed. It is difficult to keep with this speed. बाकी ये है कि बच्चों से मैं एक ट्रिक बताऊं, बच्चों से सीखने की सबसे अच्छी बात है be friendly with them. And then you ask them, और सब प्यार मोहब्बत में उनको जो है ना काम करा लें, and then you learn. तो वो learning जो है ना, वो मैं तो I had been posted to apart from HR, I had been posted to other operational areas, और वहाँ पे मुझे लगता था कि अगर कोई मेरा प्यून बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के बारे में जानता है, for which I am new, so सबको बना लेती थी, अपने साथ रखती थी. I used to move around with them and take information. Has been my strategy all over throughout my career. So इसने मुझे बहुत help किया. Ghazala, yes.
So getting straight into the heart of wisdom, I mean, I have got to say, your journey is like nothing short of legendary. So you were among a few wrapping up your MBA in the 80s. I mean, that's fabulous in those times. And there's this chapter about hostel life. Where did it happen? What was the vibe like? Plus, I'm curious, did this experience also like inspire you to give your kids the same taste of adventure abroad? Actually, Sarah, we are 5 siblings, and we are all sisters, and I am the eldest. Although I was very pampered, right. yes, I was very pampered, but like other parents, when पहले बच्चों के साथ करते हैं थोड़ा सा because थोड़ा सा हमारा बड़ा controlled environment था, and we were not allowed excuse me, we were not given that liberty जो कि लड़कों को मिलती है ना, so वो थोड़ा सा different था. So actually my father was a government official, so he was posted abroad to Saudi Arabia. तो 1 साल मुझे फिर मिले 2 semesters to live in the hostel, and I grabbed that chance, and the freedom and liberty I enjoyed. Plus there was responsibility also. So there were a lot of resources, like I mentioned earlier, कि वहाँ पर बहुत आप socialize भी कर लें, दोस्त भी बनते हैं. Plus parents don't realize बच्चों को hostel भेजने से कितना उनका upbringing, उनकी कितनी change होती है. Confidence, exactly. They are confident, and I can't tell you the amount of confidence I gained. पहले ये होता था कि मुझे पता है अच्छा अब छुट्टी हो गई है, बस वहाँ स्टॉप तक जाएगी यूनिवर्सिटी की, and my father will come and pick me up and I have to wait there. So वो सब चीजें खत्म हो गई ना, you are at your own. So like it is like कि आपने अपनी लाइफ की जो है ना वो अपने हाथ में ले ली है, स्टेट आपके हाथ में. बिल्कुल. Yeah. It has been a very very full of lessons for me, that period. I really enjoyed. Wow. और बच्चों के साथ आपने फिर क्या किया? बच्चों के साथ ये किया कि I have 2 kids. बेटा है मेरा और बेटी. बेटी is a chartered accountant. She is ACCA qualified. उसको भी भेजा था, लेकिन वो दुबई गई और वहाँ से वापस आ गई, अपने असाइनमेंट्स पे गई थी. And my son, he is an engineer. He went to NUST. He is communication systems engineering. And then he was, I intentionally sent him to the hostel. Although यहाँ पे भी facility थी NUST. Because जैसे बच्चे एक बच्चे होते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, मामास बेबी होते हैं, तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना. और फिर हम लोगों को प्रोटेक्टिव होकर बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखते हैं कि हर चीज बच्चे को ये होता है कि नहीं, जब तक अम्मा से नहीं पूछा, अब्बा से नहीं पूछा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे. So वो period when he was there, I think it was a great learning for him. He became very confident. He started taking his decisions. बना अच्छा अम्मा आपके देखिए, कपड़े भी आप ले आए, ये भी आप कर लें, ठीक है ना. So that was a different. I was, because मुझे अपना experience था, तो I forced him कि नहीं तुम फिर जाओ, यहाँ नहीं रहोगे, फिर तुम you have to go to Islamabad. He went there. Very good. Then he decided कि उसको project management में masters करना है, तो then we sent him to UK, Manchester University system. And one thing I feel, लोगों को अजीब लगता है, but I feel very proud of it. कि with the whole family, me, my husband, and my children, we are very patriotic. We don't want to settle anywhere. Pakistan. And when the time came and my son asked me कि अम्मा ये हमें यहाँ भेज सकते हैं, तो where should I go? तो मैंने कहा what is your priority? We are okay with that. He said come back and live with you guys. So that was very sweet of him, and I am very very grateful for this. And he's still with us. That's really it's a blessing. It's a blessing for us. Nice. Zabardast, Ghazala. I think we should learn from you. I have kids who are 5 and 7, and I'm sure मतलब अभी तो मुझे बहुत डर लगता है, but I mean when you think of summer schools and winter schools, तो उसी से जाहिर सी बात है, from now onwards ही practice करानी पड़ती है. So I hope I'm able to follow your footsteps, follow you in your footsteps. अच्छा, now moving on to the journey. The kind of person you are, it will not be difficult for you. Inshallah. Thank you so much, Ghazala. So now moving on to a journey that's probably been like a roller coaster of experiences for you, your time with PIA, something that we've been talking about. So from day one to the curtain close, share the highs, the lows, and everything in between. Any memorable stories, किसी employee का birthday, आपका birthday, कोई भी tales जो आपके पास मौजूद हो. Amidst it all, what was it like standing strong, as one of the pioneering women in the field? Okay.
My journey, like I told you, PI started on a very very pleasant note, and it also ended at a pleasant note. हुआ ये कि when we were officers, so we were given various assigned to various positions, but I don't know. I had some. I think I'm very studious and very hardworking person as an by nature. तो उसमें फिर ये था कि मुझे eventually different. एक तो I've never been afraid of any job rotations. Rather, I have encouraged कि ठीक है मुझे जल्दी भी ट्रांसफर कर दे because it enriches your experience और ये diversify करता है आपके experience को और आपकी knowledge को. So मैंने कभी रिफ्यूज नहीं किया एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली आई बिकम अ पर्सन जो कि वो कहते थे कोई अगर कोई ऐसा काम है कोई नया इनिशिएटिव है कुछ भी है व्हिच पीपल वो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट सो दे यूज्ड टू से चलो गजाला को भेज दे कर लेंगे. So ये जो मुझे अचीवमेंट मिली ना कि ये कर लेंगे इट मींस के दे हैड बीन एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट दैट आई हैव द एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस एंड गिव रिजल्ट्स अचीव दोज गोल्स जो भी गोल्स हमें दिए जाते थे जो भी नए इनिशिएटिव होते थे whether it is hiring, whether it is change of performance management system or it could be anything. So that was it. And one the good thing which I really enjoyed when I was general manager organization development, we decided that we would hire the cabin crew from abroad also, so that wherever our flight goes, so we should have. So that exercise was very extensive, and sure. I had, although it was a team, कुछ लोग कहीं गए, कुछ कहीं गए, but I being the focal person, मैं बहुत जगह गई हूँ, यूरोप में, एशिया में, and Russia and other places, और वहाँ से उन लोगों को करना, ठीक है? It was a different experience altogether, और बहुत मजा आया. I can't tell you how beautiful it was, और and I have seen कि मुझे लगता है कि as a nation and as people हम किसी से कम नहीं हैं. पता नहीं क्यों हमें यहाँ ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस हो रहे होते हैं कि probably यूरोप में बड़े काबिल लोग हैं या कोई अमेरिका में बड़े काबिल लोग हैं, but this is not. अच्छा मुझे लगता है हम सबसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ठीक है. People should change their mindset. नहीं बिल्कुल है, हम ज्यादा हैं. थोड़ी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कभी. बिल्कुल, that's true. अच्छा ये बताएं गजाला, आपने ट्रैवल भी किया, आपने काम भी किया, लेकिन एक अमेजिंग सी बात यह है कि आप यू हैव बीन विद योर पार्टनर इन द ऑर्गेनाइजेशन. So being a power couple in the same organization, that too, I mean, the size and kind of PIA, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं तो कहती हूँ PIA ने जो सबसे अच्छी चीज मुझे दी है वो ये है कि I got my husband. We were colleagues together. We were friends. He's from Lahore, I'm from Pindi. We joined together, and then he was in marketing, and I was in HR initially. So then we got married in 85. We had 2 kids. और फिर ये कि I personally believe that हर चीज के ना pros and cons होते हैं. So being the PI, there have been many PI couples जिनकी वहाँ शादी हुई है, but we were at the same level all the time. We were general managers together, and then we were directors together. सुबह को जो ब्रीफिंग मीटिंग होती थी उसमें मेरे हस्बैंड सामने बैठे होते थे रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, and I was representing the HR on behalf of the organization. So that was a very very unique experience, but there had been difficult times also. You know how people are. They don't they cannot tolerate your success, or they try to create hurdles for you. So we have to face I mean दोनों को हमें, अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, people are not happy with me, and if they say that they'll put it out on him, take it out on my husband. So God, लेकिन बहुत कम था. PIA employees, because उसमें हमारे, आपको पता है ना कि it has been a public sector entity, तो उसमें हमारी ग्रोथ हुई है, और उसमें 25 years से पहले छोड़ के जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. After you attain the age of 55 years or your service is 25 years, तो उससे पहले आपको टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिलते. Plus airline is a privileged industry and it was a good paymaster, very good facilities, सारी दुनिया देखने को मिली. तो लोग छोड़ के नहीं जाते. तो we, our colleagues, वो as a family we have grown.
शादियां उनके सामने हुई, हमारी एक दूसरे के सामने बच्चे हुए, तो वो फैमिली बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है। और उसकी एक रीजन ये हुई कि हमने कभी बाहर कोई ऐसे अपने सोशल सर्कल्स बनाने की कोशिश नहीं की, बट आफ्टर रिटायरमेंट आई एम फीलिंग बनाना चाहिए था। I was gonna say. अच्छा, sorry, throat is bad today. I'm very sorry because of this weather. I think मेरी आवाज को इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। मुझे आपकी आवाज आ रही है, यहाँ तक हम दोनों के बीच भी चले तो इट्स ऑल राइट, विल मैनेज द रेस्ट। ये बताएं, हाउ डू यू सी द करंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए? अगर अभी आप एचआर लीड कर रही होती तो आप क्या सजेशंस देती नए इन्वेस्टर को? देखिए, प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें पहले भी बहुत हुई, लेकिन मैं समझती हूँ चाहे प्राइवेटाइजेशन हो या वैसे कोई आपने चेंज प्रोग्राम्स लेके आने हो, कंपनी को आगे लेके जाना हो, हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो, उसके लिए ना देयर आर सेट रूल्स। लेकिन पीआईए को अनफॉर्चुनेटली ये शो किया जाता है कि पीआईए जो है वो डाउन हो रही है, शायद उसके एम्प्लॉइज की वजह से हो रही है, या क्या रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड शेयर विद यू द रीजंस कि पीआई का डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ। पीआईए इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन as far as the documentation is concerned, as far as the rules are concerned, as far as the employees training and other best practices are concerned, PI is still a wonderful organization. आप प्रैक्टिस ना करें वो अलग बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। थिंग्स आर देयर। अब अल्लाह ने हमें एक किताब दे दी है कुरान हिदायत के लिए कि अब इस पर अपनी जिंदगी गुजारें। अगर हम सारी उम्र पढ़े ही नहीं और उसको नहीं करें तो ठीक है, दैट्स आवर चॉइस, वी गो आवर वे। सो अब बात यह है कि जब तक पीआईए के लोग ही विद इन पीआईए आके टॉप पोजीशंस पर होते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनते थे, या उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, बिकॉज देखें जो एम्प्लॉइज ग्रो करते हैं ना विद इन द पीआईए, उनको ही पता होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कल्चर है, बिकॉज दिस कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से जो लोग आते हैं ना उनको कल्चर की समझ नहीं आती है, एंड इट टेक्स देम वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कल्चर बिकॉज इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरी बात यह है कि हमारे एंट्री लेवल्स हैं पीआईए में कि ऑफिसर्स किस लेवल पे आएंगे, कहाँ तक ग्रो करके जाएंगे, इट्स अ कंप्लीट करियर पाथ एंड करियर प्लानिंग। लेकिन जब ये लेटरल एंट्रीज आती है ना, आपने जनरल मैनेजर्स भी डायरेक्ट ले लिए, आपने मैनेजर्स भी डायरेक्ट ले लिए, आप डायरेक्टर्स बाहर से ले आए या आप एमडीज बाहर से लाके आपने इम्प्लांट कर दिए, सो वो जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना वो विजन नहीं रहता और वो डायरेक्शन ठीक नहीं रहती है। तो जो आपकी बात है कि अगर अभी भी मैं समझती हूँ पीआईए में एम्प्लॉइज हैं, अभी भी बैठे हुए सीनियर डायरेक्टर्स हैं, दे शुड बी गिवन अ चांस टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और दे शुड बी गिवन द चांस टू प्ले देयर रोल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा ये कि हमारे जो एक्सटर्नल प्रेशर्स, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, लोगों के यहाँ डेमोक्रेसी आती है तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे यहाँ आती है तो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है ना वो डिफिकल्ट टाइम्स फेस करते हैं। तो यही हमने भी किया है। तो मैं अगर होती अगेन बात वही है कि भाई आपको लिबर्टी दी जाए। अगर मेरा बॉस बाहर से आके बैठ जाता है कहीं से, कोई ब्यूरोक्रेट आ जाता है, ब्यूरोक्रेट्स और हम एक ही ग्रेड में डायरेक्टर बन के ऑलमोस्ट होते हैं, वो अगर आगे हमारे बॉसेस बन जाएंगे, वैसे ही टोटल डिमोरलाइजेशन और कोई उनका स्टाइल बहुत फर्क है। देखिए पीआईए पब्लिक सेक्टर एंटिटी तो है, बट डोंट फॉरगेट इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। 2 सेकंड में डिसीजन लेना होता है, जहाज कहीं स्ट्रैंडेड हो गया, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, सो हम उसके लिए वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का जो है ना हम इंतजार नहीं कर सकते। सो are grown in a highly professional environment despite being a public entity। वो बाहर से आने वालों को ना it takes time to understand the culture, क्योंकि 20,000 एम्प्लॉइज, 18,000 एम्प्लॉइज से ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि इंजीनियर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं, फाइनेंस के हैं, सेल्स के लोग हैं, एचआर के लोग हैं। सो वो सारा एक कल्चर और पीआई के बहुत ज्यादा जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स की सारी इंटीग्रेशन, ईआरपी, ये एकदम से आके समझना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिलीव मी कि व्हेन आई वाज देयर, तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते थे फर्गुसन से या EY से, सो कभी उनसे बातचीत होती थी तो वो सर पकड़ के बैठ जाते थे, कहते आपका तो सैलरी स्केल इतने ज्यादा है, आपके डिफरेंट लेवल्स इतने ज्यादा हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट होता है इस ऐसे उसको असेस करना और उसका ऑडिट करना। सो आई थिंक कि एम्प्लॉइज को जो है ना रेन दे देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजिंग। सेमी प्राइवेटाइज करें। प्राइवेटाइजेशन भी अगर देखें सही तरह से नहीं की जाए, दुनिया में सारी जगह होती है प्राइवेटाइजेशन,
सारे मॉडल्स तो सक्सेसफुल नहीं होते ना, दे आर नॉट सक्सेस स्टोरीज एट ऑल। फिर एम्प्लॉइज के लिए देखिए बार बार वॉलंटरी गोल्डन हैंडशेक ले आए, आपकी कुछ अपने आप, उससे सारा हमारा ड्रेन हो जाता है और लोग नहीं रहते। फिर सक्सेशन प्लानिंग नहीं करते बाहर से आने वाले लोग, दे डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, कि जैसे जैसे एट्रिशन हो रही, लोग रिटायर हो रहे हैं, हमें लीड टाइम के हिसाब से हमें पहले से जो है वो करना है। तो आई थिंक दीज आर दी रीजंस। मैं अगर होती तो मैं बस अपने ही लोगों को एम्पावर करती, मुझे मेरा इस पे बिलीव है। Nice. ठीक है, अच्छा, team, can I have a few comments from the audience here? And if you have any questions, let's answer those. Yeah, sure. Samia Bukhari says, how different you found Karachi from Islamabad? Ghazala, the question is, how different you found Karachi? Did you find Karachi from Islamabad? Very tricky question because I still love Islamabad. अच्छा। आप कहते हैं, दुनिया में कहते हैं आप अपनी बर्थ प्लेस से अच्छी कोई जगह नहीं होती आपके लिए। कराची एक्चुअली, आई लाइक कराची ऑल्सो बिकॉज कराची में मैंने देखा है कि पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। ये मुझे प्रैक्टिकलिटी बड़ी अच्छी लगती है। They have this dignity of labor. बड़े पढ़े लिखे लोग भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं, they don't feel ashamed. पंजाब का कल्चर बहुत डिफरेंट है, स्टिल बहुत डिफरेंट है। वहाँ ठीक है, वहाँ बहुत वार्मथ है, हॉस्पिटैलिटी है, बट दे आर लेस प्रैक्टिकल पीपल। तो यहाँ कराची में पीपल आर प्रैक्टिकल, द life pace is very fast, and this thing I like about Karachi. Samia Bukhari disagrees with you. वो कह रही है no way Karachi. I'm quite happy that I've got this experience कि मैं वहाँ से भी रही। Maybe she's born and brought up here, so that's why she's saying कि वो Karachi is best. लेकिन कराची थोड़ा वो कराची रहा नहीं है। हाँ सही बात है, लेकिन आपने भी कराची की कोई बुराई नहीं की है। आप तो यही बताई थी कि कराची के लोग प्रैक्टिकल हैं, which is actually a great thing. जो सोशल लाइफ होती थी वो हो गई है। हाँ, that's true. और पीआईए के वो पुराने टाइम्स जो हम रील्स में देखते हैं गजाला, मतलब जिस तरह से मुझे अब कराची थोड़ा सा वो लगता है कि वो इतना एंटरटेनिंग नहीं रहा। हाँ, that's actually I agree with this. और कोई है आतिर, can you please share a few more questions if you have any? उमेर कह रहे हैं, he said something too. अच्छा डॉक्टर, okay, PIA folks get to travel a whole lot. ये तो गजाला ने हमें बता दिया है कि she's traveled almost the entire world, I'd say. हाँ, बस ऑस्ट्रेलिया रह गया देखने के लिए, और बाकी तकरीबन सब जगह। Same, Ghazala, same. Even I have to go to Australia, even though we have a friend living there, but we've not gotten the chance. So I just hope soon we're able to make it. वरना साथ चले जाएंगे। Dr. Ali Raza Nemati कहते हैं, glad to see you, Ghazala. Regards to you. Do let the audience know about HR to focus on internal customer satisfaction, that is employees. ये हम बात करते रहेंगे, Dr. Ali. Don't worry about it. Ghazala will make sure that she doesn't miss out on this. अच्छा Ghazala, on a topic close to many hearts, especially right now, क्योंकि women empowerment और women's month भी जो है वो आ गया है हमारा from day after tomorrow. So what's your take based on your experience, primary experience हो या secondary हो किसी और की तरफ से, yours or others, throughout your life journey, personal या professionally? How did it shape your view on empowering the ladies out there? Like I told you, I am a team player. I believe in making teams and making friends. I invest in relationships. बहुत इस चीज का है कि मैं बाकी सब चीजें छोड़ के ना, I'm more toward the relationships, and they are very valuable to me. Women empowerment, what is women empowerment and how we can, what is the importance. Everybody knows this. लेकिन PIA में मुझे as such कोई डिस्क्रिमिनेशन इतनी लगी नहीं। लाइक आई टोल्ड यू कि बड़ी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन थी। एक ओवरऑल होता है, मुझे एक दफा लगा कि जब मैं GM बनी थी शुरू में, तो कुछ लोग ऐसे थे जो शायद मतलब एस्पायर कर रहे होंगे प्रोबेबली, तो उनको लगा कि किसी लेडी को रिपोर्ट करना मुश्किल है। बट जनरली ओवरऑल थ्रू आउट माई करियर, और एज फार एज दिस विमेन एम्पावरमेंट कंसर्न, मैं अपना पर्सनल बताऊं कि आई एम दी ओनली फीमेल डायरेक्टर ऑफ PIA who has rose to the level of a management trainee officer up to director, and I stayed there around 7-8 years as director, and then I got retired. So I have always been highly respected and given the due importance. And PIA
फिर there was a time जब PIA caters to the need of the families also. When my husband, he was in marketing when he was posted abroad, so I got leave for 3 years and I had this chance of living with him there, and then I ये अभी came मत back. बताइएगा, मेरा दूसरा सवाल है, प्लीज इसके बारे में अच्छा, ज्यादा नहीं जानकारी दीजिएगा प्लीज। तो मैं वो बता रही हूँ कि मतलब विमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा PIA फोकस करते हैं, एंड एज अ विमेन मैंने भी बहुत लोगों को कोशिश की है। मैं माय नेचर, माय हैबिट इज ऑफ मेंटोरिंग, कोचिंग, गिविंग फ्री मशवरा, जिसको बहुत लोग कहते हैं आजकल पसंद नहीं करते ना, लोगों को लगता है कि हम शायद उनकी प्राइवेसी में इन्वेड कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हर तरीके से बताने की। बहुत ज़्यादा वुमेन को एम्पावर किया भी है, और बिलीव मी के आई हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स। लोग वहाँ पर जो हैं, पहले वुमेन की पोस्टिंग कम होती थी बाहर, ठीक है, थोड़ा कम से मुराद ये है कि खास तौर से मार्केटिंग वगैरह में ज़रा कम होती थी वुमेन की, लेकिन ग्रेजुअली चेंज हुई चीज़ें। हमने नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, तो वुमेन आर आल्सो पोस्टेड, सेंट ऑन फॉरेन पोस्टिंग्स। पहले भी होती थी लेकिन तो फिर वो मिड 90s के एंड तक आके जो ना चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई थी। थोड़ा डाउनफॉल हमारा 90s के एंड में ही हुआ है, लेकिन क्योंकि देखिए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन देयर एम्प्लॉयज, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें विमेन का एक रोल रहा है। फिर हमारे विमेन प्रोटेक्शन कमेटी थी, वो मैंने बनाई क्योंकि गवर्नमेंट में उस लेवल पे वो था, आई मीन इट वाज फोकस रूल था, विमेन प्रोटेक्शन कमेटी बनाई। फिर कोशिश हम ये करते थे कि जो भी लड़कियों की ग्रीवेंसेस हैं और जो भी उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ आती, उनको हम जो है पॉजिटिवली एड्रेस करें, ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज। और फिर उसके साथ साथ इट्स वेरी टेक्टफुल थिंग कि बगैर बताए आप किसी का मसला भी हल कर दें, किसी को सजा भी नहीं मिले, बिकॉज यू रियली हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट विच इज कंजेनियल फॉर एवरीबडी। सो अच्छा, and there's this moment, and you were about to spill the beans, लेकिन ये मेरा सवाल, there's this moment we've got to touch on when life took a bit of turn and your husband did transfer and it meant pausing your career. What was going through your mind? And was this pause like a disguised blessing, जैसे हमारे लिए, मेरे लिए COVID था? How did you perceive it? And I've also got to know, how did you and your partner navigate this decision? Also, let's talk about the backbone of it all, your support system, which is your husband and then your family, your kids. When Rashid was promoted abroad, so we discussed it, and he and myself, we think कि अगर शादी करनी है तो साथ रहना, अलग रहने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव और मोटो रहा है शुरू से, एंड वी हैड बीन इसी को लेके चले हैं। एंड आई थिंक इट गिव्स यू द रीइंफोर्समेंट आल्सो कि मैरिज इज अ वेरी वेरी सीक्रेट इंस्टीट्यूशन, और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो आई डिसाइडेड, ऑल्दो वी वर एट द सेम लेवल, बट आई डिसाइडेड टू टेक द ब्रेक with the consent of my husband, and believe me, it turned out to be an excellent decision that मुझे लगता है कि वो 3 years I have spent in heaven. I was so happy, and like you very rightly said कि it was blessing in disguise, इसलिए कि मैंने जो टाइम एंजॉय किया है, क्योंकि देखे ना, while we are working सुबह से शाम तक, तो हमारा बच्चा छोटा है, वो कब पहला स्टेप लेता है, वो कब बोलता है, वो सब चीजें नैनीज को तो पता होती, we don't experience it। और फिर हमें सुबह के टाइम ये तैयार होके जाना है, तो मदर्स को वैसी, वर्किंग मदर्स वैसी बहुत गिल्टी होती हैं। सो मुझे लगा ये गिल्ट दूर करने का एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट वाज द वंडरफुल टाइम आई हैव स्पेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 years का ब्रेक से मुझे 10 years की एनर्जी मिल गई फर्दर आके काम करने की। वेरी नाइस। अच्छा, अब थोड़ी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाई और हाउ डिड यू एंड अप इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट chapter of your life? Is this more of a give back to the society now, situation where you feel, okay, so I've been there, I've done that, and now it's time that I work on others, help them understand what it's like or what it's going to be like? So सारा, तुम्हारी सबसे अच्छी बात है कि आधा जवाब तो खुद दे देती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऐसे एक तो बाय नेचर आप
होते हैं कि आप इंक्विजिटिव होते हैं, इफ यू आर अ परफेक्शनिस्ट यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शंस कि आप बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं. नंबर 2, सिंस आई वाज इन एचआर और एचआर के एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे ओडी के ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाज पार्ट ऑफ इट. पूरा पीआई का जो हमारा एक पीआई ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें सारी टेक्निकल और दूसरी ट्रेनिंग्स, इट वाज अंडर मी. सो मुझे वो जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना एट द एग्जीक्यूटिव लेवल टू एक्सपीरियंस दिस, और लोगों को फिर ये कि इंटर्नशिप्स आर आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. एंड लकीली एट दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रमोटेड एज जीएम, तो हमारे एक टेक्नोक्रेट आए थे बाहर से और उन्होंने थोड़ा सा पीआई के स्टाइल को, वो जो टिपिकल एक कल्चर हो चुका था पॉलिटिकल, ही ट्राइड टू चेंज इट. एंड उसी पीरियड में implemented the many change programs, we changed the performance management system, और ये लर्निंग और डेवलपमेंट पे बहुत फोकस था कि हमने लोगों को बाहर भी भेजा ट्रेनिंग के लिए. पहले थोड़ा सा ये होता है कि ट्रेनिंग पे पैसे लगाना जो ना शायद कुछ वेस्ट ऑफ मनी, बट व्हेन इन द लॉन्ग रन यू सी तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा होता है, आरओआई इम्पैक्ट नजर आता है, करनी चाहिए. सो ट्रेनिंग हैज बीन माय फोर्टे एंड इट वाज इन माय ब्लड. सो पहले सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दूंगी, बट अब और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. मुझे अब ऐसे लगता है कि व्हाटएवर आई हैव लर्नड, अब दिस इज द टाइम टू गिव इट बैक टू द यंगस्टर्स एंड द सोसाइटी. ठीक है, मार्केट में आई नो देयर आर वेरी फियर्स कंपटीशन, देयर आर यंग ट्रेनर्स, आई रियली लाइक देम, वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी इनोवेटिव आइडियाज. और मुझे कभी कभी लगता है maybe I'm at this age now, तो maybe के people like the younger people, लेकिन ऐसी बात नहीं. I think I have a lot of experiences with me and I have worked at different positions. Apart from HR, I have worked in operational areas and different positions. There was a time when I was the CEO and executive director of the airport hotel. For 3 years I was there. और उसमें भी बड़ा मैंने I got that. इनोवेशन लाके, और वो भी एक ऐसा एक चेंज मैंने इम्प्लीमेंट किया वहां पे कि सारी चीजें चेंज की. वो टिपिकल स्टीरियोटाइप का जो था होटल, उसको कमर्शियल लाइंस पे आई ट्राइड टू रन इट. इट वाज डिफिकल्ट, बट यू हैव टू टेक पीपल विद यू. एंड अगेन टीचिंग, इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ मेंटोरिंग, कोचिंग, तो वो आप ऑटोमेटिकली ट्रेनर बन ही जाते हैं. बिल्कुल. Right. Okay. So thank you for being with us, Ghazala, through the questions. We'll now head to the next segment and the first game of our show. We did this last time with Roshani and it was kind of fun. And I really want to try this one with you as well. Are you ready? I'm ready. Okay. Out there. Okay, so this segment is called Inspire Fire. I'll say a word or phrase, and you can respond with the first thing that comes to your mind. It could be a story, it could be just a thought, a quick one, or it could be just a single word. All right, are you ready? Yes. Your first word is innovation. Technology. Okay. Next up is performance evaluation. कोई उससे रिलेटेड स्टोरी याद आ रही है, कोई सोच इस बारे में, कोई चीज जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस विद इट? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में खामोश इसलिए हो गई थी कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और लोगों का करियर और उनकी लाइफ बेस करती है परफॉर्मेंस पे. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं अभी एक जगह पढ़ा भी रही हूँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. So I would like to say कि जो लोग इवेल्युएट कर रहे होते हैं उनका फेयर और जस्ट होना बहुत जरूरी है. एंड प्लस ये जो हमारे कॉग्निटिव बायसेस हैं, whenever we take a decision or evaluate somebody, तो जो हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं और हमने लोगों को कहीं रेट करके रखा होता है, we should try and avoid. I have to be honest. No biases. Yes. So that integrity and honesty. True. How about recruitment? देखिए, रिक्रूटमेंट बहुत ट्रिकी पार्ट है. रिक्रूटमेंट में तो आपको जो है ना, यू शुड हायर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स. आप पहले उसकी जॉब इवेल्युएशन करें. जॉब इवेल्युएशन कंपनी की होती है, फिर जॉब स्पेक्स डेवलप होती हैं और उन्हीं स्पेक्स के अगेंस्ट लें. अगर आप फर्ज करें कि हमें एक टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है, या हमें ड्राइवर चाहिए, और हमने किसी ऐसे को ले लिया जिसको ड्राइविंग आती ही नहीं है, सो दिस इज द ट्रिकी पार्ट. ये हमें बहुत
जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पॉन्डर करना चाहिए, इस पर देखभाल के लेने चाहिए। तो जॉब इवैल्यूएशन के हिसाब से ही आप जो है ना रिक्रूटमेंट करें, और अगेन इट शुड बी मेरिट बेस्ड। Merit based, yes. Yeah. And aviation industry of Pakistan. Well, I think aviation industry has flourished with the back in '98 when open sky policy was announced. तो पीआई को तो बड़ी हिट हुई थी बिकॉज प्रोडक्ट जो हमें कंपेटिटिव बनाए बगैर हमारे ऊपर थोप दी गई, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पे प्रॉब्लम तो हुई थी। बट द थिंग इज के एविएशन इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया है, बहुत सी प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं एंड इट इज गुड टू हैव दिस हेल्दी कंपटीशन। बट आई थिंक एक चीज सारा मैं शेयर करना चाहती हूँ, नॉट टू टू एनीबडी, के पीआईए को या किसी और एयरलाइन को यहाँ हमारे कभी भी एक कैटेगरी या एयरलाइन नहीं समझा जा सकता, बिकॉज आवर रेगुलेटरी अथॉरिटी सिविल एविएशन। तो जब तक सिविल एविएशन वो फैसिलिटीज हमें नहीं प्रोवाइड करेगी जो कि किसी भी एयरलाइन को एक कैटेगरी बनाती है। मसलन हमारे पास ये जो है ना, इसका ये आईएलएस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है कि हम फॉग में या उसमें तूफान में हम ऑटो जहाज को ऑटो करके और हम लैंड कर सकें, ये अभी तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो जहाज में तो उसकी कैपेसिटी होती है, बट ये क्या हमें कहीं पे भी सिविल एविएशन या अगर जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं अगर वहाँ ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं होगी तो वो चीज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो हमें अपनी सिविल एविएशन को अपग्रेड करना चाहिए ताकि हमारी जो भी हमारी एविएशन इंडस्ट्री है वो एट पार विद इंटरनेशनल लेवल्स आ सके। Wow, that's like okay. Acha, what about career 4 decades down? I think there was not fierce competition, and people used to get jobs easily. And in today's time, I think the studies have become very difficult. The targets are very high, and the thinking of the young people is changed. Like I said, कि हम 10-20 साल एक कंपनी में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But nowadays, I want to give this message to the younger generation कि please stay at least 5 years in an organization so that you know, क्योंकि 3-4 years से पहले तो आप कुछ सीख भी नहीं पाते हैं ना। But our younger generation is very वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करते हैं कि वो बस 5-6 साल में सीईओ बन जाएं और कुछ एक्सपीरियंस बार बार ऑर्गेनाइजेशंस चेंज करते हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली इट्स नॉट गुड फॉर देम। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए जॉब्स में, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बन गया स्पेशली इन आवर प्राइवेट सेक्टर। दिस इज व्हाट आई सी, बिकॉज अब जब मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर उन्होंने कहीं काम किया, बैंक्स हैं तो वो भी जल्दी जल्दी चेंज किए हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा इसमें कोई एक कोई पीरियड रख लें कि 3 years 5 years एक जगह रहें ताकि उनको एक्सपीरियंस उस जॉब का मिल जाए। दिस इज माय थिंकिंग। Okay, thank you, Ghazala. Now we're going to take a few more comments from the audience. If you can flash all the comments, because this is the only time we're getting them. Ghazala, have you considered to join academic sites seriously to share your rich experience with the universities? Currently, I'm taking 2 programs. One is from the NAD University and one is Habib University. So I'm teaching them. Yes, I'm teaching them performance management and compensation management. All right. Thank you, Samia Bukhari. Yes. And on the other part, with the other university, it's career planning and recruitment and basic core HR functions. Okay. Our next question is from Ahmed Siraj. Thank you, Ahmed, for joining in. Why did you choose PIA, Ghazala? I think PIA is still the dream of everybody because, despite being in the airline for 39 years, अभी तक I'm so much fascinated by planes कि अगर जहाज गुजरता है तो देखती जरूर हूँ, और अगर एयरपोर्ट पे जाऊँ तो but I think I'm part of this. Of course you are. You've been definitely. And I tell you, airline is a privileged industry. ठीक है, वो luckily मैं जब वो करनी होती ना आपको internship, तो I was in Islamabad my MBA, तो वो मैंने PIA में की, and when I went there तो मुझे बहुत अच्छी लगी। So वहाँ से थोड़ी सी ये इंस्पिरेशन मिली, and airline industry
is still the most privileged industry, in my opinion, Wow. because Okay. you get to know the word. You get to know the word. There are so much diversification in this industry कि और जगह नहीं है. कोई लोग कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में हर काम होता है, हर फंक्शन होता है, and it's entirely different. So you have to have, वो स्पेशलिटी आप में एक आ जाती है. एंड देन दूसरी आफ्टर इवन वन दूसरी एयरलाइंस या दूसरी कंपनीज भी जो हैं वो आपको प्रेफरेंस देती हैं इफ यू हैव कम फ्रॉम द एयरलाइन बैकग्राउंड. ठीक है. Thank you, Ghazala. Can we get more comments, please? What project or policy you consider your greatest achievement? Ghazala, can you hear me? Hello? Yeah. What project or policy do you consider as your greatest achievements? I think again I was there are two things. एक तो I was involved in making the manuals, whether it's the policies procedure manual or the job specification or job description manual, because उनको बनाना network पे और पूरे company के लिए was not easy. And number two, the audit part, because उसमें मैंने 2-3 मरतबा हमारे जो सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं वो कंडक्ट कराए हैं, and that was a great learning. IOSA audit है, तो I used to represent the organization part which was from the HR. So उसके लिए, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि आप ऑडिटर्स के हर सवाल का इंस्टेंटली जवाब दें. So that was a very very great learning. And जो मैं समझती हूँ कि जो मैंने एक चीज़ और रखी कि PI में मैंने इंस्टीट्यूशनलाइज कराई थी दिस चेंज के हमने अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम था. पहले नहीं होता था PI में, लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम जब हमने किया तो वो 2 months जो थे स्टूडेंट्स के, उसको हमने इतना अच्छा यूटिलाइज किया कि उनको पहले से पूरा प्लान बना के हमने उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा. वो सारे काम जो कि हम समझते थे उन मैनेजर्स के साथ पहले से पूछ के कि जो वो नहीं कर सके थे, एक तो वो एक्स्ट्रा मैन पावर मिली उनको, प्लस हमने उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उनका एक जर्नल निकाला, बिल्कुल हमने उनको प्रोफेशनल लाइंस पे किया, और फिर वो डेटा सारा सेव किया. और वो डेटा जिस वक्त अप्लाई किया, इस वक्त बहुत से लोग इस वक्त PI में ऐसे हैं जो उस टाइम पे जो बेस्ट इंटर्नीज थे उनको हमने फिर हायर किया था. सो दैट वाज अ वेरी गुड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस. अब आई एम नॉट श्योर कर रही है कि नहीं, बट आई थिंक आई रियली एंजॉयड इट एंड इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. क्योंकि एक टिपिकल स्टीरियोटाइप ऑर्गेनाइजेशन में आप इतनी बड़ी चेंज लेके आए और लोग उसको एक्सेप्ट करें, दैट डिफिकल्ट. Okay, great. So, Ghazala, we're nearing the end of the program. It's just I need the cities and the names, those people who've joined in and written their names. If I could see them and reply to them, guys. Okay, Uzma Tanveer, thank you so much for joining in. Nasir Bhatt is from Karachi. Then we have Wasim Malik, thank you for joining from Islamabad. Ahmed Siraj is from Karachi. All right, thank you. Okay, Ghazala, our next segment and our last one is rapid fire round. You know how that works, right? I ask you quick questions, you give me quick answers. Rapid being the key word here. And you don't need to think. You just come up with whatever it is that comes to your mind. Okay? Are you ready? Let's do. Yes, I am ready. Let's go. Let's fire away. Okay, Ghazala, early bird or night owl? Which one are you? I'm both. Night owl. Really? Okay, night owl. One book that has profoundly affected you or impacted you? Sorry, can you repeat it? One book that has profoundly impacted you. जिसका impact आप पे बहुत deeply पड़ा हो. You're asking कोई ऐसी book? कोई book, कोई किताब? Okay. It is इकबाल की एक book है, Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. मुझे बहुत टाइम पढ़ने में, because when I started reading it, तो it was इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी. I must compliment के अलामा साहब की पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश इतनी सुपर थी कि हम जैसे लोग समझ नहीं सकते हैं. But basically it was published in 1930, और it is the combination of his different articles जो उन्होंने लिखे हैं इस्लाम पे.
and he was known as a modern Islamic scholar. Of तो course. वो एक बुक है जो मैंने पढ़ी तो उसको लगा के, but I think that is one achievement, and it will change your perspective, honestly. All right, I'll keep that in mind. The most adventurous thing you've ever done. कभी PIE का plane देखे? Most adventures when I was abroad, so I learned skiing and swimming also. तो वो मुझे बड़ा मजा आता था उसमें, वही एडवेंचर होता था. Going places, mountains पे जाना, चढ़ना, and with kids, that I find very interesting. Nice. One piece of advice you'd give to your younger self. My younger self? Yes. Okay. To be more patient and Okay. content. Coffee. Okay. One skill you wish you had. Flying a plane. Yes. Ooh, nice one. I was gonna say हमारे पास तो सारी skills हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, but good one. The one country you'd love to travel again or next. That is Europe. Any place, maybe it's Germany, Norway, or Copenhagen. I would love to go there. Nice. Okay. A skill you're currently trying to master. That is the art of capturing and keep people together and Engaged. focused. Engaged, yes. Engaged. And if you could have dinner with a historical figure, any historical figure, who would it be? Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam. Ooh, अच्छा, nice. मैं उनकी जितनी पढ़ी हैं उनसे ज्यादा विजनरी लीडर हो नहीं सकता. स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, कमिटेड, एंड अगर आप उनकी वो पढ़ें कि मतलब ही वाज बैरिस्टर आल्सो, और ही वाज जो कुछ उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को कंसीव किया और बनाया, उनसे ज्यादा कोई विजनरी. और एंड अगेन मोस्ट मॉडर्न पर्सन, ये नहीं कि वो कोई बहुत रिलीजियस मुल्ला थे जिन्होंने किया है. सो पीपल अपने अपने पर्सपेक्टिव में और अपने अपने उसमें रह के भी जो है ना बहुत कुछ कर लेते हैं. वो ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्ट्री. आई एम रियली वेरी वेरी इंस्पायर्ड. Yes. All right. Thank you, Ghazala. Thanks so much. Your story is a showcase of resilience, adaptability, and the power of making choices that aren't just brave, lekin matlab also deeply personal. So thank you for opening up to us, for sharing your light, and for being an inspiration. Thank you very much, Sarah. It was also wonderful talking to you, and thank you for giving me this platform where I could express myself. I don't know how good I was, but one thing I missed, and I want to, I think it will not be fair that I don't mention it. You asked about my support system. So I just want to give this to my husband, that he has been extremely, extremely supportive. Not in terms of कि वो mentally support कर रहे हैं, बल्कि घर को देखना, look after करना. When I used to travel, on official duties, तो 2, 3, 4, 10 लग सकते हैं, तो he has never ever said no. And उन्होंने ही मुझे इसके लिए तैयार किया कि कभी किसी असाइनमेंट से रिफ्यूज ही नहीं करना. So he was there and he's still here. मेरी बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं, जो मैं नहीं करती, जो मैं कर सकती हूँ, but I don't. So I'm really thankful to him for being in my life. And thank you very much, dear. It was so wonderful talking to you. And inshallah, I'll see you again. Thank you so much, Ghazala. Thank you. Bye. Goodbye. Goodbye. Since Torque is celebrating Women's Month of March all around with glow in the air making breezes, we have another special edition just for women returning to work or aiming to return to work. And those also who've been, who've actually returned. We have Azra Maqsood, Faryal Sethi, and Samra Adnan as our guests. This one's a must watch. This is going to be on the 8th of March when they celebrate the International Women's Day, and so do we. We also have a Ramadan edition or Ramzan edition coming on the 22nd of March, where you'll get to see all of our Torque tribe members. Holistic living के ऊपर हम बात करेंगे. ये एक दफा हम पहले भी चला चुके हैं. We're going to be talking about managing our monsters. This is going to be hosted by me and your favorite Umair Jaliawala, and details will be out soon. So stay tuned. Hope you had a great time with us today. Thank you for being here. Thanks, Atir, Hafsa, Yasbi. Thanks, Torque team. See you all very soon, inshallah. Goodbye and Allah Hafiz.
ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना